Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today I am sharing another experiment with the salt effect, and I am sure you will enjoy today's video just as much as my previous ones. But before we start, make sure to subscribe to my channel and press the bell icon if you are visiting for the first time. Don't forget to follow me on Instagram and Facebook. चलें आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। किसी भी सॉलिड सरफेस पे फैब्रिक या कोई सी भी शीट बिछा लें और उस पे ब्रिक या वुड का पीस रख लें और उसके बाद सॉल्ट रॉक रख के थोड़ी की मदद से उसके टुकड़े कर लें, जैसा कि मैं वीडियो में कर रहा हूँ। Place a fabric or any sheet on a solid surface and position a brick or piece of wood on top. Then take a rock salt piece and use a hammer to break it into smaller fragments, just as I am doing in the video. सॉल्ट का ये टुकड़ा आपको किसी भी अच्छी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे जैसे रॉक पे हथौड़ी लगती है, सॉल्ट पीसेस अलग होकर दूर जा गिरते हैं। इसी तरह आपको डिफरेंट साइज़ेस का सॉल्ट मिल जाएगा। You can easily find rock salt at any good grocery store. As you can see, when the hammer strikes the rock, the salt pieces break apart and scattered. This way, you can get salt in various sizes. यहाँ मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नमक को तोड़ लूँगा और जिस साइज़ का नमक चाहिए उन टुकड़ों को अलग कर लूँगा। Here I will be breaking the salt according to my requirements and separating the pieces based on the size I need. तकरीबन ½ इंच के टुकड़ों को अलग कर लें, क्योंकि आज मैं ज़रूरत से ज़्यादा बड़े साइज़ के सॉल्ट से इफ़ेक्ट लूँगा। देखें तो क्या होता है। इस तरह के हार्मलेस एक्सपेरिमेंट्स कर लेने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए देखते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या निकलता है। Separate the pieces into approximately ½ inch chunks, because today I will experiment with using larger than usual pieces of salt to see what effect it creates. There is no harm in conducting such harmless experiments, so let's see what results today's experiment brings. सॉल्ट इफ़ेक्ट लेने के लिए कोई सी भी सिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सिल्क ऑलरेडी फ्रेम पे स्ट्रेच कर चुका हूँ। आप शावर की मदद से हल्का सा सिल्क पे पानी स्प्रिंकल करें और उसके बाद सिल्क पे ब्रश चलाएं, जैसे कि मैंने किया है, ताकि जो ड्रॉप्स सिल्क के सरफेस पे रह गए हैं वो स्प्रेड हो जाएं। To achieve the salt effect, you can use any type of silk. I have already stretched the silk on a frame. Lightly sprinkle some water over the silk using a shower and then brush the surface as I did to spread any water droplets left on the silk. कलर अप्लाई करने के लिए स्पंज या ब्रश का इस्तेमाल करते हुए कलर को सिल्क पे अप्लाई कर लें। Apply the color on the silk using a sponge or brush. अब एक एक करके सॉल्ट के पीसेस को सिल्क पे अपनी मर्ज़ी के फासले पे रखते जाएं। मैंने तकरीबन 1.5 इंच के फासले पे सॉल्ट पीसेस को रखना शुरू किया है। Now one by one place the salt pieces on the silk at your desired distance. I am placing the salt pieces at approximately 1.5 inches distance. अब बारी है ड्रॉपर की मदद से सॉल्ट के पीसेस पे कलर डालने की। एक एक ड्रॉप ड्रॉपर की मदद से तमाम सॉल्ट के पीसेस पे डाल दें। देखते हैं कि टाइम लैप्स में क्या इफ़ेक्ट आता है। Now it's time to add color to the salt pieces using a dropper. Use the dropper to place a drop of color on each salt piece. Let's see what effect it creates in a time lapse.
मैंने 10 मिनट के बाद टाइम लैप्स की वीडियो को रोक के सॉल्ट के मज़ीद पीसेस पहले से रखे सॉल्ट के पीसेस के दरमियानी फासले पे रखना शुरू किए हैं। इसके बाद हम वीडियो को दोबारा टाइम लैप्स पे लगा देंगे। I stopped the time lapse video after 10 minutes and started placing more pieces of salt in the gaps between the previously placed salt pieces. After this, we will put the video back on time lapse. टाइम लैप्स में आने वाले इस इफ़ेक्ट को मैं काफ़ी हैरत से देख रहा हूँ। अब जबकि आपके सामने वीडियो है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ साइज़ के नमक के टुकड़ों से इफ़ेक्ट भी काफ़ी मुख्तलिफ आता है, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं। आई एम वॉचिंग दिस इफ़ेक्ट ड्यूरिंग द टाइम लैप्स विद ग्रेट सरप्राइज एंड नाउ दैट यू हैव द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू. You can see that the effect created by different sized salt pieces is quite different, as we are seeing. सिल्क के मुकम्मल ड्राई होने के बाद सॉल्ट के पीसेस को सिल्क से रिमूव करके सिल्क को फ्रेम से उतार लें. After the silk has completely dried, remove the salt pieces from the silk and take the silk off the frame. मैंने आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स इस्तेमाल किए हैं, इसलिए सिल्क को दोनों तरफ से आयरन कर लें. यूज़ आयरन फिक्स्ड सिल्क पेंट्स, so make sure to iron the silk well on both sides to set the colors. आयरन करने के बाद सिल्क को टैप वाटर में 5 मिनट के लिए भिगो के रख दें और उसके बाद पानी से निकाल कर वायर पे हैंग कर दें. सिल्क को आपस में रगड़ने से गुरेज करें. After ironing, soak the silk in water for 5 minutes. Then take it out and hang it on a wire. Avoid rubbing the silk together. सिल्क ड्राई हो जाए तो उसको एक बार फिर आयरन कर लें ताकि सिल्क के तमाम wrinkles निकल जाएं. Once the silk is dry, iron it again and remove all the wrinkles. Finally, this effect is very surprising to me. After achieving this effect, I have many ideas in my mind related to its use. If you enjoyed the video, please like it and share it with your friends. Feel free to share your suggestions with me in the comments box. If you have already liked the video, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon. Take care of yourself and remember me in your prayers. Allah Nigeban.